Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty here at iExamB. So in this video today, I'm going to continue with my series that I have started exclusively for the preparation for various competitive examinations. And this can be helpful not only for competitive examinations but also for those who find the subjects difficult to complete. They want a smart way of studying various law subjects. डेफिनेटली दिस सीरीज कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. इसमें आप कम समय में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को कैसे पढ़ना है ये समझ सकते हैं. नो द ईजिएस्ट वे टू स्टडी दिस सीरीज आई हैव स्टार्टेड. बाकी के वीडियोज़ अगर आपने मिस कर दिए हैं, आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू अ यूट्यूब चैनल दैट इज़ लीगल बी एंड चेक आउट द रिमेनिंग वीडियोज़ इन द प्ले लिस्ट. Embrace the iExamB learning experience with us, and you can also check out the courses that are available for various competitive exam preparations for law officers in various bodies, regulatory bodies, banks and whatnot. सारे courses आप iexamb.com पे check out कर सकते हैं. Demo भी activate करके देख सकते हैं. You can also write to us an email on hello@iexamb.com and call us on the number 9205524028 for any queries. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द ईजीएस्ट वे टू स्टडी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इन जस्ट 3 days. So this will definitely give you a guiding light in how you have to prepare this subject. The subjects are very vast. लॉ है, लॉ कभी भी वास्ट ही रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, बट उसको किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड रिमेंबर दैट एवरी सब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन डिमांड. So according to that, if you plan your preparation in the right direction, then definitely you can score well in your exams, whether it is your semester exams in your LLB or it is your competitive exam preparation. You have to keep some important things in mind for every subject. How you can complete Transfer of Property Act in 3 days. Before we start with that, the study tip for this subject is focus on the parts from where questions are asked in exam. टीपी एक्ट एक बहुत ही फेमस लेजिस्लेशन है. स्पेशली कुछ चैप्टर्स उसमें से ऐसे हैं जहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं. सेल, मॉर्गेज, लीज, ये तीनों तो इतने इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप सिर्फ इतना भी पढ़ के जाए तो आपके लिए सफिशेंट हो जाता है टीपी एक्ट से कई बार एग्जाम्स में. So that is something really important. Practically, if you will see, there also this subject has its most applicability for lawyers. If you're working in the law officer capacity or a legal advisor or you are conveyancing lawyer, anything like that, these 3 chapters are paramount important for you. But at the same time, you cannot ignore the basics of this subject. वाई द सब्जेक्ट्स बेसिक्स इज इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन रह जाता है. स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि ये एक्ट किस पे एप्लीकेबल है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोथ. तो ये आपको स्टार्टिंग के पार्ट में ही मिलता है. तो ये बेसिक आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. प्रैक्टिकली भी आपको पता होना चाहिए. अगर हम सेल की बात कर रहे हैं अंडर टीपी एक्ट, तो वो सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी की है. अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की है तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में चला जाता है. दिस बेसिक शुड बी वेरी क्लियर विद यू फॉर दिस सब्जेक्ट स्पेशली. सो दिस इज द स्टडी टिप फॉर दिस सब्जेक्ट. Now coming to the number of days, only 3 days you can complete this subject. It is not very difficult to grasp this subject क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं. समटाइम और दी अदर वी हैव ऑब्जर्व्ड अ सेल ट्रांजैक्शन, मॉर्गेज ट्रांजैक्शन, लीज ट्रांजैक्शन. ये सब हमारे आसपास होने वाले ट्रांजैक्शंस हैं जो हमने कभी ना कभी विटनेस किए होते हैं. सो दीज आर ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग पार्टीज. दिस वन लाइन ऑलवेज यू रिमेंबर एंड स्टार्ट स्टडिंग दिस एक्ट. फर्स्ट डे डेफिनेटली यू शुड फोकस ऑन द बेसिक्स. इस एक्ट में काफ़ी सारे डॉक्ट्रिन्स भी हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन हो गया, सिर्फ उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए. देन यू शुड नो व्हाट इज वेस्टेड इंटरेस्ट, कंटिंजेंट इंटरेस्ट, conditional interest, what is the doctrine that protects the property from the property should not get accumulated in one family, in one clan, it should freely flow in the society. ये कुछ objectives या principles है जिस पे टीपी एक्ट का स्टार्टिंग पार्ट काफ़ी हद तक बना हुआ है.
सो वो आपको पता होना चाहिए। एंड जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा, व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, what are the essential elements and the important definitions from this. So ये आपको पढ़ना है एंड इसको पढ़ने में समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जस्ट हमें गैदर करना होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है. So this part you can do in the first day in 3 hours, and if you have not studied this earlier that it may take 4 hours, but वैसे 3 hours में हो जाना चाहिए. Second day you can take up sale and mortgage. This will be the most important part of your TP Act. Sale is a very short topic. Mortgages might take some time, but in that it is not very difficult. Start focusing on the kinds of mortgages. That is very important. हमेशा वहाँ से questions पूछे जाते हैं. Sale and mortgage is the crux of this act. So 3 to 4 hours you can give on the second day. And third day you can cover up lease. Lease is a very easy topic. I would say काफ़ी easy and काफ़ी जल्दी cover हो जाता है. It's not very difficult. Lease, देन एक्सचेंज तो कुछ भी नहीं है उसमें, जस्ट सेल और एक्सचेंज अगर आप साथ में भी पढ़ लेते हैं सेकेंड डे पे तो भी चल जाता है. यू कैन मर्ज इट लाइक दिस कि आप सेल और एक्सचेंज को साथ में ही पढ़ लें, क्योंकि ज़्यादा हद तक सेल और एक्सचेंज सेम ही है. द ओनली डिफरेंस इज इन सेल यू हैव मनी कंसिडरेशन, इन एक्सचेंज यू डोंट हैव दैट, यू हैव प्रॉपर्टी फॉर प्रॉपर्टी. सो दैट यू कैन स्टडी वेरी वेल विद सेल ओनली. फिर गिफ्ट भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है. गिफ्ट की पिक्यूलियरिटी पता अगर आपको चल जाती है, दैट इट इज़ वॉलंटरीली गिवन एंड इट इज़ नॉट हैविंग एनी कंसिडरेशन, द ओनली ट्रांसफर इन विच यू डोंट हैव एनी कंसिडरेशन. सो उस लाइन्स पर अगर आप एक बार रीड भी करते हैं, इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू. एंड देन ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, not very time consuming. Actionable claim is what? It is a claim which is not secured by any kind of security. जैसे mortgage है फॉर एग्जाम्पल, उसमें सिक्योरिटी होती है, उसी तरीके से एक्शनेबल क्लेम में सिक्योर्ड एसेट्स नहीं होते हैं. द क्लेम इज दैट इज देयर, इट परसिस्ट्स, बट दैट इज एक्शनेबल बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी सिक्योरिटी अटैच्ड टू इट. So this you can complete on the third day itself. You may devote 1 hour extra, 4 hours तक आप दे देंगे तो आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है. एंड पूरा सब्जेक्ट भी 3 दिन में आप बहुत ईजीली grasp कर सकते हैं. And then you can solve MCQs and check your preparation as well. If you need any kind of guidance, you can reach out to us by writing to us by any of the following methods. As I told you, check out our online courses. You can also write to us in the comment section of this video. And don't forget to subscribe to LegalBee. Prepare 50% faster with us at iExamBee.